Good afternoon and welcome to Moneycontrol live stream. You're watching Closing Bell. I'm Santosh Nair. And I'm Yatin Mota. Well, yet another lackluster trading session. Yatin, this somehow seems to have become the norm. I think one will have to carry an easy chair and probably some book to keep oneself occupied during the day. Absolutely. And it's not lackluster. It is, very, very dull. When things are cloudy, chilled, and it's like a boring day. You can't even talk with your contacts or the market people, because everybody has that kind of boring or low energy days. Absolutely, the Nifty is moving in a 25-30 point range. Bank Nifty, it's like subah aao bech ke chale jao, kind of a setup. So things are not that great, and stock specific action also is quite limited. Well, both indices slipping late in the day, and among the prominent losers today we had shares mostly from the Realty and PSU Bank. PSU banks in particular have been taking a beating through the week. FMCG stocks managed to hold ground today. The India VIX or the volatility index climbing 0.7% to 14.08, and among the prominent Nifty gainers today we had NTPC, Britannia, Reliance Industries, Divi's Lab and Tata Steel. Overall, it was a good day for metal stocks. Adani Enterprises, Apollo Hospitals, Coal India, Bajaj Auto and Sun Pharma were among the prominent losers. Absolutely, and Santo, if you look at the trading day, power stocks, as you were mentioned, were in focus. अगर आप in general दूसरे sectors देख लें तो आज PSU banking space में काफ़ी negative action था. मेटल स्टॉक्स भी काफ़ी मिक्स थे, और ऑब्वियसली हेवी वेट्स जो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि टिपिकली बाज़ार को सपोर्ट करेंगे, जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, L&T, वहाँ भी आपको एक म्यूटेड मोमेंटम देखा. वॉल्यूम्स भी काफ़ी ड्राई अप आज के बाज़ार में होते हुए दिखाई पड़े. Clearly, banking stock something has changed quite a bit out there. The story which was largely that banks will start gaining from the repricing of their loans, which is the borrowing rates. Now I think that has completely changed. Now I think the worry is that they will have to start paying more for their deposits. Absolutely, and जो net interest margins में सैंटो हमने expansion देखा है पिछले 2 quarters से, I think that is kind of peak net interest margin, क्योंकि आगे चलते हुए deposit rate भी बढ़ने वाले हैं, तो आपका जो spread है वो balance to negative side पे चला जाएगा sequential basis पे. ऑब्वियसली कोई भी आर्ग्यू करेगा कि जैसे कोटक बैंक के 4.5% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं, SBI के आप पकड़ लो तो 3-3.5% है, तो कहीं ना कहीं ये जो 25-30 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट आपको हर क्वार्टर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आज डिपॉजिटर्स को आपको अट्रैक्ट करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी. और ग्लोबली आपने देखा है कि ऐसे ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जिस तेज़ी से रेट हाइक कर रही है उतनी तेज़ी से डिपॉजिट हाइक हुआ नहीं है. लैग से कैचअप होगा, और शायद आने वाले क्वार्टर्स में आपको ज़्यादा एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा डिपॉजिट रेट. And we are also hearing a lot of news about prepayment by the Adani group, but that somehow simply doesn't seem to be helping the flagship, which is Adani Enterprises. The stock again down by about 2%. So what is happening out there, Yatin? So I think there is one indication, Santo, and whatever we read from news reports, obviously the company is not really commenting or giving clarity as to what are the capex plans going to look like from here, क्योंकि उन्होंने बीच में एक पावर प्लांट जहां वो एक्विजिशन करने वाले थे DB ग्रुप से, वो एक्विजिशन ड्रॉप कर दिया. दूसरी तरफ जैसे कि सैंटो बता रहे हैं, थोड़े बहुत कमर्शियल पेपर्स प्रीपे करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोमोटर प्लेज प्रीपे करने की कोशिश कर रहे हैं. तो काफ़ी सारी जगह पे उन्होंने जो मामला है कॉन्फिडेंस का दिखाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट को अब ये बिलीव होने लगा है कि जो एग्रेशन से शायद ये एक्सपेंशन अगले 3-4 वर्षों में कर सकते थे, क्योंकि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट का एक ओवरहैंग रहेगा. थोड़ा बहुत जो क्लैरिटी अभी भी आना बाकी है, तो शायद ये एक्सपेंशन प्लान्स पे थोड़ा बहुत धीमी गति आपको होती हुई दिखे, और जो हिस्टोरिक ग्रोथ रेट्स हैं शायद रिपीटेबल ना हो, और बाजार अभी मुझे लगता है वैल्यूएशन में वो चीज़ डिस्काउंट कर रहा है. And with that we move on to the stocks on our watch list this afternoon, starting with Steel Authority of India. The stock was up close to about 1%. In fact, it's been inching higher for the last 3 trading sessions now.
third quarter numbers were just about okay. The slight surprise was on its adjusted EBITDA, where the company managed to post numbers ahead of what analysts were expecting. Centrum has upgraded its rating on the stock and a price target of 100 rupees. Now, according to Centrum, the management has guided for strong sales and realizations in January so far. Also, coking coal costs are now beginning to show signs of easing, and there are a few other things that the company has been doing. One is that its staff cost has been reducing. It has been a sharp improvement year on year, not so much quarter on quarter. What the company is now doing is that when its high cost personnel are retiring, they are replacing them with lower cost personnel, so that there is some relief as far as the wage bills go. And lastly, Centrum has said that the company, the steel authorities dues from the railways, that is likely to get cleared shortly, and once that happens, it's likely to see a significant reduction in the overall debt position of the company, which is right now little over 300 crores, and Centrum's estimate is that it could come down to as low as 255 crores. So, these are some of the factors that are making Centrum bullish on steel authority, although the stock still remains among the least preferred for most analysts in the overall steel basket. So, most analysts typically, when they talking bullish about the steel sector, the two stocks that immediately figure are Tata Steel and JSW Steel, but the kind of sideways movement the stock has seen for a long time, steel authority has seen for a long time, it somehow now seems to be emerging out of it. Absolutely, steel stocks में silver lining तो है, लेकिन सैंटो दो चीज़ें, एक तो ग्लोबली हमने देखा है कि जो इंडियन स्टील प्रीमियम थे वो गिर रहे हैं, डोमेस्टिक HRC प्राइसेस 1500 रुपये पर टन के हिसाब से गिरे हैं वर्सेस लास्ट मंथ, एंड कोकिंग कोल प्राइसेस अगेन हैव स्टार्टेड मूविंग अप, तो शायद थोड़ा बहुत प्रेशर स्टील कंपनीज में आपको लोकली आता हुआ दिखाई पड़ रहा है. बहरहाल सेल की तो बात सैंटो ने की. BEL वो दूसरा स्टॉक है जो मेरे रेडार पे है. आज इनको एक मेट्रो रेल का ऑर्डर भी आया, और कहीं ना कहीं अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें BEL दिल्ली मेट्रो के लिए करता है, खास करके रेड लाइन के लिए वहाँ कॉपरेशन है उनका. और अगर हम डिफेंस बिजनेस की बात करें तो यहाँ भी ऑर्डर बुक मजबूत बनती हुई नज़र पड़ रही है. एरो शो में आपने देखा होगा कि इंडिया की सब ज़्यादातर डिफेंस कंपनियों ने काफ़ी सारे MOU साइन किए हैं, और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए अगर आप देखें तो BEL के लिए अब समय आ गया है कि वो अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स को भी रैंप अप करे, और मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि धीरे धीरे करके एक्सपोर्ट मार्केट्स का शेयर भी आपको ओवरऑल रेवेन्यूज़ के हिस्से में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा. तो डिफेंस कंपनीज़ में आज BEL एक स्टॉक था जो थोड़ा बहुत फोकस में था. Yes, the overall thing about defense stocks, Yatin, is that they've been really struggling for direction for the last 3-4 months. Yes. Last week during the Aero show, we did see some spurt of activity once again, but overall, I think the story now is too well known. Too many people have got into it, and probably that's the reason you're not seeing much of a move there. Even in the case of Bharat Electronics, the latest quarter numbers were okay, but nothing beyond what the market was expecting, and probably that's what explains the stock being sideways to lower since September. Absolutely, and मुझे लगता है सैंटो 120 रुपए की रेंज से स्टॉक लगातार गिर रहा है, और कहीं ना कहीं अब यहाँ बॉटम फिशिंग आपको होते हुए दिखाई पड़ रही है. Last stock on my watch list is Marico. Now, Marico again has been a laggard in the overall FMCG space. It's been particularly hit hard by the weakness in the rural segment. That's been one of the pain points for that. But Citi, brokerage house Citi, is bullish on Marico. It is a price target of 585 rupees for the stock. According to Citi, Marico has managed to show core growth in all its segment, and that is accelerating. And Citi expects a healthy uptick across its business segment to start taking effect from the current quarter. But most importantly, it feels that the stock is now available at reasonable valuation. There's a huge gap between Marico and some of its peers, which is not really justified considering that the company's prospects are expected to be improve going forward. So Marico was one of the big gainers in trade today, the stock climbing close to about 2%. Absolutely, and the valuation gap between Marico and HUL would be quite high, Santo, versus Nestle could be even higher. But Marico में हम ये अगर देखें Santo, तो खोपरा प्राइसेस थोड़े बहुत कूल ऑफ हुए हैं, तो शायद मार्जिन को एक टेलविंड है,
बट अगर हम प्राइवेट लेवल्स की बात करें तो आप रिलायंस रिटेल में चले जाइए, डीमार्ट में चले जाइए, हेयर ऑयल के लिए काफ़ी सारे आपको सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स और प्राइवेट लेबल जो अभी स्ट्रैटेजी चेंज की है काफ़ी सारे रिटेल आउटलेट्स ने, खास करके ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन भी हीटअप हो रहा है और शायद इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत मार्केट शेयर भी ढीला हुआ है मैरिको का हेयर ऑयल सेगमेंट में। और दूसरी बात सैंटो के रूरल मार्केट में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, वहाँ ग्रीन शूट्स की बातें हो रही हैं, लेकिन व्हेन यू टॉक टू मैनेजमेंट्स अभी भी वहाँ रिकवरी थोड़ी डिलेड है, तो वो एक रिस्क शायद मैरिको में आपको बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। चलिए, ये मैरिको की बात हुई। और आज एक सुपर हॉट सेक्टर था पावर, और सुपर हॉट इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस टाइम की जो गर्मी है, जो समर है, हार्श हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने के आसार हैं। एल नीनो और काफ़ी सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर आप स्टडी देखें तो फोरकास्ट यही है कि बहुत ही जल्दी आपको शायद मार्च में ही शुरू हो जाए समर्स। और उसके वजह से आज अगर आप देखें तो जो पावर मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन आया काफ़ी अहम माना जा रहा है पावर सेक्टर के लिए, क्योंकि पावर मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो इम्पोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट्स हैं उनको फुल कैपेसिटी पे चलना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है। और जो पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो लगभग 230 गीगावाट्स की रहने वाली है अप्रैल 2023 में। और अगर हम करंट कैपेसिटी की बात करें तो वहाँ डिमांड सप्लाई मिसमैच है, कहीं लोड शेयरिंग ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट्स ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट जो है अब आगे आके कह रही है कि जो प्लांट्स में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है उनको भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ानी होगी। और अगर हम अदानी पावर, टाटा पावर की बात करें तो इनका मुंद्रा पावर प्लांट जो है रिस्पेक्टिवली जो गुजरात में सिचुएटेड है वो इम्पोर्टेड कोल पे चलता है, लॉस मेकिंग यूनिट है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये है बाज़ार को कि यहाँ कॉम्पनसेशन देगी सरकार, क्योंकि जो इम्पोर्टेड कोल प्राइसेस का कॉस्ट है और कॉस्ट ऑफ जनरेशन है, कॉस्ट ऑफ सेल है, यहाँ डिफरेंशियल्स हैं। और अगर ओपन मार्केट और मर्चेंट सेल्स करने दें इन पावर प्लांट्स को डिमांड जो पीक पे आने वाली है उसको मीट करने के लिए, तो कंपनीज को जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। और शायद सैंटो इसीलिए एनटीपीसी, पावर ग्रिड और आईएक्स जैसे स्टॉक्स भी आज मोमेंटम में दिखे। Well, and thanks for those insights, Yatin. And on that note, it's a wrap on this episode of Closing Bell. Thank you for watching. जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And we'll be back with you again at 9 a.m. tomorrow morning.